and this is your digital learning platform. Today we are going to look into the chapter The Elevator, which is written by William Slater, and this particular horror story is a part of class 10 ICSE. Okay, so without wasting any more time, let's get into the chapter. But before starting, as we always say, please take a pencil so that you can note down, you can um, jot down all the points that I'm going to tell you. Okay, so see, The Elevator, written by William Slater. It was an old building with an old elevator. The building is old, the elevator is also old, so it creates a sense of oldness. Okay, it was an old building with an old elevator, a very small elevator. How is the elevator? Very small, which could carry only three people. So the elevator is so small that it can carry only three people. It conveys a sense of limitation. It conveys a sense of limitation or limited space or limited space. Okay, so a very small elevator which could carry only three people. Martin, a 12-year-old boy, 12 साल है मार्टिन का उम्र, felt nervous in it from the first day he and his father moved into this apartment. So मार्टिन जो है 12 साल उसका उम्र है, एज है, तो वो बहुत नर्वस फील करता है इस एलिवेटर पे. ओके, पहले दिन से मार्टिन और उसके पापा पहले यहाँ पे नहीं रहते थे, पहले दूसरी जगह रहते थे. कुछ ही दिन हुआ या फिर कुछ ही महीने हुआ यहाँ पे वो दोनों शिफ्ट किए हैं. Of course, he was always uncomfortable in elevators. So this is the main point. सिर्फ यहाँ का जो एलिवेटर है वो नहीं, मार्टिन एलिवेटर यूज करना ही उसके लिए बहुत एक नर्वस हो जाता था वो. Afraid that they would fall. And what was the reason of his fright? He believes that the elevator would fall, but this one was especially unpleasant. So किसी भी एलिवेटर, कोई भी एलिवेटर मार्टिन यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि कभी भी ये जो एलिवेटर है, ये जो लिफ्ट है, वो गिर सकता है. लेकिन ये जो पर्टिकुलर एलिवेटर है इस बिल्डिंग का जो एलिवेटर है वो पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा ही अनप्लेजेंट है. क्यों? Perhaps this was because of the poor lighting. Because the lighting is very poor, the walls are very dirty. Perhaps it was because the door, which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. तो यहाँ पे हम लोग को तीन रीजन मिला. एक, the lighting is very poor. Second, the walls are very dirty. And third, the door, जो कि ज्यादा देर तक खुला नहीं रहता है, एकदम clanging sound करके वो बंद हो जाता है. Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor. और ये वाला चौथा पॉइंट हुआ. ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि जब कोई एलिवेटर, वो पर्टिकुलर इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर है, वो एलिवेटर जब भी कोई फ्लोर से आगे जाता है तो अजीब एक साउंड होता है, एज इफ इट वाज एग्जॉस्टेड. यहाँ पे एलिवेटर जो है इसका पर्सोनिफाइड किया गया है. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन. तो ये सब रीजन है इसके लिए मार्टिन जो है इस बिल्डिंग का एलिवेटर को पसंद नहीं करता है. मे बी इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा छोटा है. ये 5th नंबर पे आ गया तो फिर इट सीम्ड क्राउडेड इवन विद ओनली 2 पीपल इन इट. सो earlier in this particular story we came to know that the elevator can hold only 3 people at a time, लेकिन वो इतना छोटा है कि अगर 2 पैसेंजर भी उसमें आ जाए तो मानो कि तीसरे का जगह नहीं होता है. The stairs were no better. Martin tried them one day. एक दिन मार्टिन क्या किया, स्टेयर्स के मतलब सीढ़ी से ऊपर जा रहा था. ठीक है, देयर वर नो विंडोज, द लाइट्स वर नॉट वर्किंग. सो एलिवेटर का जैसा सिचुएशन है, सीढ़ी का भी लगभग वैसा ही सिचुएशन है. द एलिवेटर हैज वेरी पुअर लाइटिंग. सिमिलरली द स्टेयर केस में क्या है, लाइट जो है वो काम नहीं करता है, वहां पे कोई खिड़की भी नहीं है. Martin's footsteps echoed behind him on the cement as though there was another person climbing, getting closer. By the time he reached his home on the 17th floor, another information, Martin lives on 17th floor. Okay, he was gasping for breath. और वो जब सीढ़ी से जब जाता है तो सीमेंट में अपने फुटस्टेप का आवाज ऐसे इको होता है मानो कि कोई और उनके साथ ऊपर उठ रहा है और बहुत क्लोज उठ रहा है. ठीक है, और मार्टिन डर जाता है और वो 17th फ्लोर में जब चढ़ता है उसके बाद डेफिनेटली ही वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. Martin's father worked at home.
He wanted to know why Martin was out of breath. Why did not you take the elevator? He asked, frowning at Martin. Frowning conveys a sense of irritation. Frowning conveys a sense of irritation. His father is very irritated with Martin's behavior. कि तुम एलिवेटर क्यों यूज नहीं करते हो तुम? मार्टिन के पापा उन्हें पूछते हैं ये बात, ठीक है? यू आर नॉट ओनली स्किनी, तुम सिर्फ स्किनी नहीं हो, वीक एंड बैड एट स्पोर्ट्स, हिज फेस सीम टू से, बट यू आर ऑल्सो अ कावर्ड. सो यहाँ पे उसके जो पापा है, ही इज एन एब्यूजिव फादर. He is an abusive father. He abuses his son a lot. वहां पे वो बोल रहा है कि तुम सिर्फ स्किनी नहीं हो, तुम सिर्फ वीक नहीं हो, तुम सिर्फ स्पोर्ट्स में खराब नहीं हो, हालांकि तुम एक कावर्ड भी हो, तुम डरपोक भी हो. आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर. तो पापा का बात इतना लगता है उसे, इतना इंसल्टिंग फील होता है कि उसके बाद से वो एलिवेटर यूज करता है. ही वुड हैव टू गेट यूज टू इट. इट कन्वेज अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन. conveys a sense of determination. मार्टिन डिटरमाइंड होता है कि मुझे इस एलिवेटर में यूज टू होना ही है. He told himself, just like he got used to being bullied at school. और यहाँ पे a sense of helplessness. A sense of helplessness. यानी कि मार्टिन का हालत क्या है, देखो कैसा है. देखो स्कूल में वो जाता है तो वहां पे बुली किया जाता है, उसे रैगिंग किया जाता है, और उस रैगिंग में वो यूज टू हो चुका है. सिमिलरली वो ये सोचता है कि मेरे पापा मुझे इतने अब्यूजिव बात बोलते हैं कि मुझे अब इस एलिवेटर में यूज टू होना है. सो इट इट इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, जहाँ पे मार्टिन जो है वो डिटरमाइंड होता है कि उसे यूज टू होना है. सेकेंड, अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, कि वो स्कूल में जब जाता है तो वहां पे भी हेल्पलेस फील करता है. क्यों? बिकॉज ही इज बीइंग बुलीड बाय अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल और ऑफ द क्लास. But he did not get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it for hours by himself. But it wasn't much better when there were other passengers. लेकिन वो used to नहीं हो पाता है because he thinks that most probably suddenly the elevator stops and he would be there inside the elevator for hours. He did not like to be close to them. He also disliked the way people tried hard not to look at one another, staring at nothing. देखना ये एलिवेटर में होता है कि हम लोग जब जाते हैं कि मान लो हम लोग दरवाजे की तरफ एकदम देखते रहते हैं, या फिर लाइक हम लोग अपना फोन देखते रहते हैं. सो दिस बिहेवियर ऑफ पीपल इज ऑल्सो नॉट लाइक बाय मार्टिन. तो ऊपर जितना रीजन हम लोग को मिला, 5 रीजन, तो ये वाला रीजन भी ऐड हो जाएगा. व्हाई does not Martin like the elevator? And this is the 6th point. I hope clear. One morning, एक दिन सुबह क्या हुआ? The elevator stopped at the 14th floor. So Martin lives on 17th floor, and while he was using the elevator, at that time the elevator stopped at 14th floor, and a fat lady got on. Fat lady. She was wearing an old green coat that ballooned around her. Okay, एक फैट लेडी अंदर आई, एक ग्रीन कलर का कोट पहनी थी जो कि बलून की तरह था उनके चारों तरफ. As he waddled into the elevator, sorry, huh. As she waddled into the elevator, Martin was sure he felt it sink under her weight. She was so big that her coat brushed against him, and he had to squeeze himself into a corner. तो उसे देख के मार्टिन को लगा कि श्योर अब ये एलिवेटर जो है ये गिर जाएगा. और वो जो लेडी थी, वो लेडी इतनी मोटी थी कि वो जब अंदर आया एलिवेटर का, तो मार्टिन मानो कि एकदम दरवाजे के साथ, सॉरी वॉल के साथ एकदम स्क्वीज हो गया. देयर वाज नो रूम. यहाँ पे रूम मतलब स्पेस. Okay, there was no room for anybody else. The door closed quickly behind her, and instead of facing off it, she turned around and stared at Martin. She turned around and stared at Martin. Strange behavior. Strange behavior of the lady. Okay. He looked at her
For a moment, she had a large fleshy cheeks and no chin, just a huge mass of neck. Her blue eyes were tiny but sharp. ये सब keywords है जो words या फिर lines या फिर phrases जो मैंने highlight किया है सब key phrases है. They seemed to be boring into Martin's face. So this is the description of the lady or appearance of the lady. Okay. Martin looked away, but the woman did not turn around. So the lady was very stubborn. The lady was very stubborn. मार्टिन उनके तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन वो लेडी जो है मार्टिन को घूरे जा रही है. Was she still looking at him? He glanced at her quickly, then looked away again. She was still watching him. He wanted to close his eyes. Now Martin is feeling very irritating and he wants to just close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner, but how could he? The elevator creaked down to 12. 14th में वो lady आई elevator के अंदर 12 पे अब elevator पहुंचा. Then 11, the piggy eyes were still looking at him. See how nicely or and how in an articulating way the author is creating and building up the tension कि वो लेडी जो है वो आई एलिवेटर के अंदर 14 फ्लोर में 14 13 12 11 एकदम एक एक फ्लोर नीचे आ रहा है एलिवेटर लेकिन तब भी वो जो लेडी है वो मार्टिन को घूरे जा रही है कंटिन्यूअसली. शी हैड टू बी क्रेजी. वो पागल होगी सीरियसली. किसने सोचा? मार्टिन ने. व्हाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस? व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट? नाउ इट्स अ सेंस ऑफ फियर. ओके, इट्स अ सेंस ऑफ फियर. मार्टिन को अब डर लगने लगा. तो देखो पहले ही मार्टिन जो है वो बहुत नर्वस रहता है जब भी वो एलिवेटर में आता है. उसके बाद द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द लेडी इज मेकिंग हिम मोर एंड मोर नर्वस. शी डिड नथिंग. शी ओनली वॉच्ड हिम breathing loudly until the elevator reached the first floor at last. Martin wanted to run past her to get out, but there was no room. एकदम नीचे एलिवेटर पहुंच गया और मार्टिन चाह रहा था कि एकदम वहां से भाग जाए, दौड़ के चला जाए, बट देयर वाज नो स्पेस. व्हाई? बिकॉज द लेडी वाज सो फैट. He could only wait as she turned and moved slowly out into the lobby. Then he ran. He did not care what she thought. He ran nearly all the way to school. अब मार्टिन इतना डर गया था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो लेडी जो है वो क्या सोचेगी मार्टिन के बारे में. मार्टिन वहां से निकला और दौड़ते एकदम कहाँ पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया. He thought about her all day. Okay, दिन भर मार्टिन उस लेडी के बारे में सोचता रहा. Did she live in the building? He had never seen her before and the building was not very big. तो क्या वो वहीं पे रहती है? और बिल्डिंग भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है. तो अगर if she lives over there, then definitely Martin must have met her before. She was visiting somebody. But 7:30 in the morning was too early for visiting. 7:30. So when did the incident take place? 7:30 in the morning when Martin was going to school. ये MCQ. Okay. Martin felt nervous. Martin felt nervous when he got back to the building after school. But why should he be afraid of an old lady? He felt ashamed of himself. So, a sense of introspection. मार्टिन को बहुत शर्मिंदा फील हो रहा है कि मैं क्यों डरूं एक लेडी से. He pressed the button and stepped into the elevator, hoping that it would not stop, but it stopped on the third floor. So मार्टिन ने सोचा, मार्टिन के दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा कहा तो मुझे यूज टू होना है. तो मार्टिन फिर स्कूल से आया, वो फिर एलिवेटर में गया और मार्टिन सोचा कि हे भगवान, ये एलिवेटर किसी भी फ्लोर पे ना रुके, सीधा सीधा 17 पे जाए. बट इट was not like that. The elevator stopped on the third floor. Martin watched the door slide open, revealing a green coat, a piggish face, and blue eyes which were already staring at him as if she knew he would be there. तो अब धीरे धीरे जब भी वो एलिवेटर थर्ड फ्लोर में रुक गया और दरवाजा धीरे धीरे खोल रहा है, मार्टिन को डर हो रहा है और वो धीरे धीरे दरवाजा खुला और मार्टिन ने देखा कि ऑलरेडी द ग्रीन कोट, अ पिगिश फेस एंड ब्लू आईज वर वेटिंग ओवर देयर as if the lady knew it very well that Martin was there in the elevator. It was not possible. Okay, a sense of disbelief. It was like a nightmare for Martin, but there she was going up
said Martin, his voice little more than squeaky. So Martin ने बस इतना कहा कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है, जल्दी से वो बोल दिया ताकि वो लेडी अंदर ना आए. She nodded and stepped on. So Martin thought that if he would say that the elevator is going up, maybe the lady would not come inside. But no, the lady came inside. The door slammed. He watched her puggy hand move towards the buttons. She pressed not 14 but 18. The top floor, that means the apartment was an 18-storied building, and Martin lives on 17th one. The elevator trembled and began to go up. Personification. Okay, the fat lady watched him. तो फिर वो अंदर आई और मार्टिन ने देखा कि पगी हैंड से उन्होंने बटन प्रेस किया. ना तो 14 ना तो 80 ना तो 14 बल्कि 18. क्यों 14? क्यों? क्योंकि उस दिन वो लेडी 14 फ्लोर से आई थी एलिवेटर में. सो मार्टिन को लगा कि 14 फ्लोर में वो उतर जाएगी. ठीक है, बट ना, वो लेडी जो है शी प्रेस द बटन 18. दैट मीन्स शी वुड गो टू 18th floor. Okay, the elevator trembled and began to go up. The fat lady watched him. This morning she got on the 14th floor. So why did he get on at the third floor today and go up to 18? The elevator seemed to be moving more slowly than usual. See, building up of tension. Building up tension and anxiety. Okay. Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs, but he could not reach the buttons without touching her, and he did not want to do that. Martin ने सोचा कि मैं 7th फ्लोर पे उतर जाऊं, वहां से मैं बाकी 7th फ्लोर में, बाकी 10 फ्लोर में पैदल चला जाऊंगा सीढ़ी से. बट अगर उसे बटन प्रेस करना होता तो मार्टिन को लेडी को छूना पड़ता, एंड मार्टिन डिड नॉट वांट टू डू दैट. When the elevator stopped on his floor, she hardly moved out of his way. He had to squeeze past her, rubbing against her horrible scratchy coat. He was afraid the door would close before he could get out. She turned and watched him as the door slammed shut. Now she knows I live on 17th. He thought. तो फिर 17th फ्लोर पे आके रुक गया. अब मार्टिन एकदम जगह नहीं था वहां पे, और मार्टिन किसी बदर वहां से निकला. तो पहले जब वो लेडी जब अंदर आई एलिवेटर का, तो लेडी जो है वो मार्टिन की तरफ फेस करके खड़ी थी. अब मार्टिन निकल गया तो वो भी यू टर्न ले लिया, और वंस अगेन शी वाज स्टेयरिंग एट मार्टिन. नाउ मार्टिन थॉट दैट अब इन्हें पता चल गया कि मैं 17 फ्लोर पे रहता हूं. तो ये सोचो कि दिस पॉइंट emphasizes how frightened Martin is right now. Have you ever noticed a strange lady in the elevator? He asked his father that evening. Can't say I have, he replied, not looking away from the television. Not looking away from the television. Okay? तो उनके पापा को पूछा कि क्या आपने कभी भी एक स्ट्रेंज लेडी को एलिवेटर में देखा है? तो उनके पापा ने कहा मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं लगता कि नहीं देखा है. एंड हिज फादर डिड नॉट इवन फील टू लुक एट मार्टिन. ओके, दैट मीन्स कितना अवॉइड करता है वो अपने बेटे को. कांट आई, सॉरी ये वाला लाइन दो बार हो गया, omitted. Martin knew he was probably making a mistake, but he had to tell somebody about the woman. She was in the elevator with me twice today. She just kept staring at me. She never stopped looking at me for a moment. So once again, the sense of helplessness. Martin is feeling very helpless in front of his father. He wants to share his feeling, he wants to share his fright to his father, but his father is not paying any attention to what he is saying. But Martin को लगा कि मुझे ये किसी को तो बताना ही है. What are you so worried about now? His father said, turning impatiently away from the television. What am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor lady. अब सेंस ऑफ इरिटेशन, उसके पापा एकदम इरिटेट हो चुका है. मैं क्या करूंगा तुम्हें लेके? हाँ, अब मतलब तुम इतना डरपोक क्यों हो? तुम अब एक पोर लेडी से अब डर रहे हो. आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा हूं. यू आर अफ्रेड, हाँ तुम डर रहे हो. said his father. When are you going to grow up and act like a man? तुम ग्रो अप कब होगे? तुम मतलब एक बड़े लोग की तरह ओके कब बिहेव करोगे? आर यू गोइंग टू बी टिमिड ऑल योर लाइफ? क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही डरपोक रहोगे?
Martin did not want to cry in front of his father. Why? Because he knew it very well that he would not get any kind of consolation from his father. So he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very well. Sorry, he slept very little. In the morning, when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Next day, already the fat lady was waiting for um, Martin in the elevator. Martin stood there, unable to move, then backed away. As she saw him, now Martin is completely afraid to get into the elevator. Her expression changed. So at first, the lady was, looking at Martin. Okay, and another kind of expression was there on her face. And as she saw that Martin was not getting into the elevator, the expression of the lady changed, completely changed. She smiled as the door slammed. यहाँ पे a sense of mystery, a sense of mystery. वो लेडी बस स्माइल किया और दरवाजा जो है वो बंद हो गया. Martin started running down the stairs. Out of fear, the stairs were dark and he fell. His father was silent on the way to hospital. Now, Martin is being taken to hospital by his father, and his father is very angry. He is completely silent, disappointed, and angry with him for being a coward and a fool. Coward and fool, keywords for Martin, descriptive words for Martin. Martin had broken his leg and needed to walk on crutches. So Martin का पैर टूट गया है, अब वो उसे crutcher लेके चलना होगा. He could not use the stairs now. Was that why the uh, fat lady had smiled? Did she know what would happen? So right now Martin is uh, thinking about the fat lady, and somehow he is guessing that uh, is it the reason for what the lady was smiling at me? Because when the door of the elevator opened and he saw that the lady was inside the elevator, he did not get into the elevator. And at that time, the lady only looked at Martin, and she gave a faint smile as if she knew what is going to happen with Martin. At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. At least it conveys a sense of relief. It conveys a sense of relief. Okay, there was no room for that, for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her and maybe would understand. तो अब मार्टिन जब रिटर्न आ रहा है तो एलिवेटर में उसके पापा भी है उसके साथ. तो मार्टिन को अच्छा लगा कि चलो भाई आज तो वो लेडी जो है वो अंदर नहीं आ सकती है, और अगर आएगी भी तो पापा खुद देखेंगे. When he got home, he could stay in the apartment for a few days. The doctor said that he had to rest as much as possible. Martin felt quite safe. Once again, a sense of relief. Okay, Martin felt quite safe from the fat lady now. Oh, I almost forgot. His father reached out and pressed number 9. So right now, both of them are in the elevator. Okay, पापा ने कहा ओ माय गॉड मैं तो भूल गया, बोल के उन्होंने क्या किया 9 नंबर प्रेस किया. व्हाट आर यू डूइंग? asked Martin, trying not to sound afraid. Why? Because Martin knew it that if my father would come to know that once again I am afraid to use the elevator alone, he would abuse me. Okay, that's why he just tried to show that he was not at all afraid. Sorry, ये लाइन भी दो बार हो गया, ये omit. I promised to visit Mr. Ullman, said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. So his father said that I would visit Mr. Ullman. Okay, so I need to go. Let me go with you. I want to visit her too. तो प्लीज मुझे भी जाना है, मैं भी उनसे विजिट करूंगा. Martin pleaded, struggling to move on his crutches. So Martin, once again, Martin is feeling very helpless. Okay, that he too wanted to go with his father. But the door was already closing. Afraid to be in the elevator alone, said his father. तुम डरे हो एलिवेटर में अकेले जाने में. Grow up, Martin. Grow up. The door slammed shut. वो दरवाजा जो है एलिवेटर का वो बंद हो गया है. Martin hobbled to the buttons and pressed 9. A sense of restlessness. A sense of restlessness. Okay,
Martin hobbled to the buttons and pressed 9, but it did not do any good. The elevator stopped at 10. 10th floor में जाके elevator रुक गया. Where the fat lady was waiting for him. She moved in quickly, and he was too slow to get past her in time to get out. The door closed and the elevator began to move. और वो लेडी जल्दी से अंदर आ गई और एलिवेटर चलने लगा. Hello, Martin, she said and laughed and pushed the stop button. और फिर उस लेडी ने कहा कि हेलो मार्टिन बोल के वो हंसने लगी और वो लेडी स्टॉप बटन प्रेस कर दिया. तो यहाँ पे जाके स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो गया है. I hope the story, the concept, the outline is clear to you. Now, let's move to the critical appreciation part. Okay, see, many unnamed and non-identical characters are there, but Martin is the center of attraction who has alexithymia. Alexithymia is a phobia. Elevator is a small place that is used as the backdrop of the story. See, elevator एक छोटा सा जगह है, स्पेशली इस बिल्डिंग के एलिवेटर तो और भी छोटा है, जो कि एक साथ एट ए टाइम 3 जन को होल्ड कर सकता है, लेकिन 2 जन अगर एलिवेटर में आ जाए तो जगह नहीं होता है तीसरे का. बट देन ऑल्सो द एलिवेटर, द स्मॉल प्लेस इज यूज्ड एज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी, and it is also a sharp contrast with the fear of Martin. The place is very small, the elevator, the place is very small, but the fear for the place is very intensive. Okay, जगह जो है वो जगह बहुत छोटा है, लेकिन उस जगह के लिए जो डर है मार्टिन के मन में वो बहुत बड़ा है. So it is a sharp contrast. Okay, this story has an open ending where readers want to know the consequence of Martin. देखो स्टोरी जाके वहां पे खत्म हो जाता है. अब बहुत सारा क्वेश्चन आता है हम लोग के मन में कि मार्टिन का क्या हुआ, उस लेडी ने मार्टिन को मार दिया या फिर जिंदा रखा, वो लेडी स्टॉप बटन क्यों प्रेस किया. सो द स्टोरी हैज एन ओपन एंडिंग. द मिस्टीरियस कैरेक्टर ऑफ द लेडी क्रिएट्स अ स्पूकीनेस इन द स्टोरी. Though the lady has only one dialogue, but actually she only holds the grip of the story. ये सही बात है. देखो उस entire story में इस लेडी का बस एक ही डायलॉग है, हेलो मार्टिन. लेकिन ये पूरा जो स्टोरी है, पूरे स्टोरी को एकदम होल्ड कर रहा है, ग्रीप कर रहा है. कौन? ये मिस्टीरियस लेडी, अननेम्ड मिस्टीरियस लेडी. ये यूज करना, अननेम्ड मिस्टीरियस लेडी. Okay, the lady's first and the only dialogue is hello Martin. This is the only dialogue of the lady, is the end of the story that throws the readers into an ocean of suspense. Until the lady was quiet, Martin was safe. ये सही बात है, पहले मार्टिन से भेंट हुआ वो लेडी चुप थी, सो मार्टिन सेफ था. लेकिन अभी लेडी ने कहा कि हेलो मार्टिन बोल के उन्होंने स्टॉप बटन प्रेस कर दिया. दैट मीन्स राइट नाउ मार्टिन इज नॉट सेफ एट ऑल. और मे बी द वर्ड स्टॉप इंडिकेट्स द एंड ऑफ मार्टिन्स लाइफ. यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे स्टॉप का एस जो है ये कैपिटल है, ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिंग द स्टॉप बटन इंडिकेट्स द एंड ऑफ मार्टिन्स लाइफ, कि मार्टिन को अब मार दिया जाएगा. नंबर 7, मार्टिन्स फादर has set an example of a rude father who does not care for his child. He even did not feel to look to Martin when he was trying to share his fear and anxiety with his father. So Martin's father एक abusive father है who does not care of his child. Okay, he is very irritated, he is very ill-tempered. ये गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन. लास्ट है थीम, फ्राइट. मार्टिन का जो फ्राइट है, जो डर है, वो इस स्टोरी का मेन थीम है. क्रीपीनेस, द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द लेडी, द एटमॉस्फेयर ऑफ द एलिवेटर एज वेल एज ऑफ द स्टेयर्स. Mystery, once again, the mysterious behavior of the lady, even who is the lady, where she comes from, where she goes, everything is mystery and nothing has been told in this story. Ragging and bullying. Okay, Martin is being bullied by the students of his school. Body shaming, the way the lady has been described, उसका फैट है, ओके, चिक नहीं है, ये सब जो डिस्क्रिप्शन है, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ body shaming. And last one is strictness. Though his father is very abusive, but एक जगह पे या फिर सर्टेन लेवल पे जाके ये समझ में आता है कि मार्टिन का जो फादर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. वो चाहता है कि मार्टिन ग्रो अप करे, वो चाहता है कि मार्टिन ना डरे. सो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी एक थीम होगा.
So this is the complete explanation of the story. I hope it is clear to you. फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद. एंड प्लीज subscribe to the channel and press the bell icon so that you can get all the notifications and share this story with your friends also. Tata bye bye, see you.